radial artery. रेगुलर में क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, एक्टोपिक बीट्स, पैरोक्साइजमल अरिथमियास इन द फॉर्म ऑफ अटैक्स एंड बाउट्स। और रेडियो फेमोरल डिले, नॉर्मली रेडियल पल्स और फेमोरल पल्स होते हैं। डिफरेंसेस इन टाइमिंग बिटवीन पल्सेस एट रेस्ट। रेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन, एक्टोपिक बीट्स, पैरोक्साइजमल अरिथमियास। रेगुलर में क्या होता है? Atrial fibrillations, ectopic beats, paroxysmal arrhythmias in the form of attacks and bouts. irregular में atrial fibrillation होती है, ectopic beats बनती है। कैसी beats बनती है? ectopic beats, paroxysmal arrhythmias होती है in the form of attacks and bouts. अटैक्स एंड बाउट्स के फॉर्म में ये रिदम्स आते हैं। सडन ऑनसेट, सडन टर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल हार्ट रिदम। सडन ऑनसेट होगा, सडन टर्मिनेशन होगा। अब नॉर्मल हार्ट रिदम का एकदम सडन ऑनसेट, सडन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो पैरोक्साइजमल अरिथमियास होती है। रेडियो फेमोरल डिले में क्या होता है? नॉर्मली रेडियल पल्स ही फेमोरल पल्स होती है। रेडियल पल्स और फेमोरल पल्स बराबर होते हैं। जो आपकी रेडियल पल्स होगी वही फेमोरल पल्स होगी। तो रेडियो फेमोरल डिले यही है, रेडियल पल्स और फेमोरल पल्स, गोराइन वाली पल्स के बीच में डिले आ जाना ड्यू टू आर्टरीज के टाइम, ग्रेट आर्टरीज की वजह से और एब्डोमिनल आर्टरीज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई में कोई होगी उस वजह से, एब्डोमिनल आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो साइनस ब्रैडिकार्डिया में क्या होता है? साइनस डिस्चार्ज आपके एसिनोड में बढ़ जाता है 100 बीट्स पर मिनट से। साइनस ब्रैडिकार्डिया साइनस डिस्चार्ज एसिनोड में डिक्रीज हो जाता है। रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया में आ गया जैसे फैगट साइंस, जिसमें 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है। पल्स डज नॉट राइज बाय 10 से 1 डिग्री से टेम्परेचर में बढ़ाया हुआ तो ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। अगर नॉर्मली 1 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर में तो आपका पल्स रेट 110 बीट्स पर मिनट बढ़ता है, मगर रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया में नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया। तो पल्स क्या है? पल्स इज rhythmic expansion. It is a wave felt by finger. It is a rhythmic expansion and contraction of an artery as a result of heart systolic ejection of blood. Systemic contraction and expansion of artery is a heart systolic ejection of blood. Pulse rhythmic expansion and contraction होना आर्टरी के as a result of heart systolic ejection of blood. Arterial pulse क्या होती है? Recoil of artery produced by pressure wave generated after left ventricle systole. Pulse rate waveform is generated from left ventricle contractions per minute. Heart rate ventricle per minute recorded at apex beat. Arterial pulse rate, heart rate is a pulse में आती है. Wave felt at finger by finger produced by cardiac systole traveling in peripheral direction and the arterial rate faster than the column of blood. Traveling in peripheral direction in the arterial in the rate faster than the column of blood. Arterial pulse, rhythmic expansion and recoil of an artery produced by pressure wave generated after left ventricle systole. Arterial pulse is rhythmic expansion and recoil of an artery, contraction and expansion of an artery produced by pressure wave generated at left ventricle systole. Pulse rate at which waveform is generated from left ventricle contractions per minute. Heart rate at which left ventricle contracts per minute recorded at apex heart. So arterial pulse is rhythmic expansion and contraction of arteries produced by pressure wave generated after left ventricle systole. Obviously due to left ventricle systole.
हार्ट रेट इज पर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की वजह से जो पर मिनट लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है ड्यू टू सिस्टोल वेवफॉर्म जो जनरेट होती है. हार्ट रेट पर मिनट ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड है. तो पल्स, आर्टरियल पल्स रेट एंड हार्ट रेट. तकायासु आर्टराइटिस जो है पल्सलेस डिजीज जिसे हम कहते हैं. हार्ट रेट नॉर्मल होता है, पल्स रेट 0 अपर लिम्स. डिफरेंसेस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन आर्म्स इज 10 to 15 mmHg तक डिफरेंसेस है बिटवीन ब्लड प्रेशर बिटवीन आर्म्स. Differences in blood pressure between arms 10 से 15 का होगा. Chronic granulomatous inflammatory disease mainly involving the aorta and its major branches leading to stenosis, occlusion or aneurysm. There is hypovolemia. Heart rate decreases, pulse rate decreases, but heart rate is higher than pulse rate. Mirror image of the index of the heart. The arterial pulse is the mirror image of the left ventricular systole. The left ventricular systole प्रेशर वेव बनाता है. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ब्लड कॉलम की वेलोसिटी होती है 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकेंड. Mirror image of the index of the heart. Arterial pulse is the mirror image of left ventricular event cardiac index. Cardiac pulse is the mirror image of the left ventricular systole. The types of pulse: temporal pulse, cardiac pulse, apical pulse, radial pulse, femoral pulse, popliteal pulse, dorsalis pedis pulse, posterior tibial pulse. JVP is visible, carotid pulse palpable होता है. JVP हमें visible होता है, carotid pulse is palpable. तो पल्स के रेट जो होता है नॉर्मल ऑफ बीट्स पर मिनट इज पल्स. नॉर्मल रेसिंग स्टेट में डल्स में 50 to 95 बीट्स पर मिनट, एयरिंगल्स में 40 to 95 बीट्स पर मिनट. Faggot sign, dissociation between pulse rate and body temperature where fever is present between but pulse rate is relatively slower. Rate and rhythm is seen in radial artery. Relative bradycardia 1 degree rise in temperature. Pulse does not rise by ऐसे टाइफाइड में. Faggot sign जो होती है dissociation between pulse rate and body temperature where fever is present but pulse rate is relatively slower. Faggot sign is dissociation between pulse rate and body temperature where fever is present but pulse rate is relatively slower. Fever होगा but उसका pulse rate slow होगा. ये हो गया relative bradycardia. 1 डिग्री से 10 पल्स रेट बढ़ना चाहिए. रिदम की होती है रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट्स. रेगुलर repeats at regular intervals. Regularly. रेडियोफेमोरल डिले होता है जैसे रिदम में. रेडियल डिले भी होता है. राइट रेडियल पल्स और लेफ्ट रेडियल पल्स बराबर ना होना. रेडियल डिले हो जाना. राइट रेडियल पल्स और लेफ्ट रेडियल पल्स का बराबर ना होना. रेडियल आर्टरी का डिले. रेडियल डिले कॉजेज है सब क्लेविन आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन, सब क्लेविन आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन. Characteristics and volume of pulse. करेक्ट मतलब क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म कैसी है और वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ पल्स. हाइपोवॉल्यूमिक या हाइपरवॉल्यूमिक. सिन एंड राइट करोटिड पल्स आर्टरी.
Right carotid pulse या dream. On the basis of character and volume of pulse, pulses of the following types. Anacrotic wave, normally palpable. Diacrotic wave, not palpable. And diacrotic notch. Upstroke waveform A, anacrotic wave, non-palpable. Diacrotic wave, non-palpable. D, normally palpable waveform. Downwave, non-stroke waveforms, diacrotic wave, non-palpable. And diacrotic notch.